Bit 4 रो क्वेश्चन होची इंटीग्रेशन ऑफ bit 4 रो क्वेश्चन होची इंटीग्रेशन ऑफ a to the power z square root of a to the power 2z minus 4 dz that is equal to हमें एकुइमत लिखि परिया a to the power z रो स्क्वायर minus 4 रो स्क्वायर रूट dz तापरे putting t is equal to a to the power z हमें जब यार डेरिवेटिव बाहर करवा ताले dt by dz is equal to a to the power z रो डेरिवेटिव रहबो a to the power z ओके to the power z रो डेरिवेटिव रहबो a to the power z so then dt is equal to a to the power z dz बर्तमान a to the power z dz एठी अछि तो हम को सिंपलीफाई करले हमको आसीबो इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर माइनस 4 रो स्क्वायर रूट रो डेरिवेटिव ओके यार डेरिवेटिव बर्तमान सिंपलीफाई करले यार डेरिवेटिव हम फाइंड करबा and t square minus 4 square root of dt is equal to a to the power z square root of a to the power 2z minus 4 dz एटा या से इक्वल तो हम आपको दुईटा फंक्शन रे डिवाइड करबा एटा होची 1 एटा होची t square minus 4 square root dt दुईटा फंक्शन तो आई दुईटा फंक्शन भीतर के हमको फर्स्ट फंक्शन चूज करे पड़िबो फर्स्ट फंक्शन का हम 1 नबा सेकंड फंक्शन होची t square minus 4 square root 1 वाला फर्स्ट फंक्शन t square minus 4 वाला सेकंड फंक्शन that is equal to integration of a first function dz into second function minus integration of a first function into derivative of a second function or whole integration okay so dt is equal to t square root of t square minus 4 minus integration of t into derivative of t square minus 4 1 by 2 square root of t square minus 4 into 2t t square minus 4 integration like 2t the whole integration dt so that is called whole integration of a integration part so that is equal to dt 2 cancel गला हमारे इंटीग्रेशन पार्ट आसिला t स्क्वायर हमारा आसिला
that is equal to t square root over t square minus 4 minus integration of t square by t square minus 4 square root dt. किंतु क्वेश्चन टा होची इंटीग्रेशन ऑफ 1 by t square minus 4 square root dt. No, so anyway, integration of t square minus 4 square root dt is equal to result हमर आसिला t square root of t square minus 4 minus integration of a denominator numerator जे t square रे 4 plus करिवा 4 minus करिवा divided by square root of t square minus 4 dt. So that is equal to t integration of t square minus 4 square root dt is equal to t square root of t square minus 4 minus आगु दुईटा पार्ट डिवाइड कले t square minus 4 divided by t square minus 4 square root minus ये minus का से plus 4 टा minus 4 हो जाओ. So minus integration of 4 by square root of t square minus 4 into dt. That is equal to t square root of t square minus 4 minus integration of t square minus 4 square root dt. ये रेटा कैंसिल हो गले t square minus 4 square root of t square minus 4 cancel हेले t square minus 4 square root बाहरिबो. So that is equal to minus 4 integration 1 by t square minus 2 square root dt. That is equal to square root of t square minus 4 square root dt. आगु लेफ्ट साइड रे थिला एटा ता पाखु नै आस इंटीग्रेशन ऑफ t square minus 4 square root dt is equal to t square root of t square minus 4 minus 4 log t plus t square minus 4 square root plus c. हम यदि बर्तमान आपको ऐड कर दबा 2 integration of t square minus 4 square root dt is equal to t square minus 4 square root minus 4 log t plus t square minus 4 square root plus c. ये 2 टाको आन के बोथ साइड रे हम डिवाइड कर दबा 2 टाको ताले हमर सिंपलीफाई हे जबो इंटीग्रेशन ऑफ t square minus 4 square root dt t by 2 t square minus 4 over root minus 4 divided by 2 log t plus t square minus 4 square root plus c. Okay, so that implies t square minus 4 dt ର square root तार actually original value है जो कहते ना a to the power z square root of a to the power 2z minus 4 dz ର integration is equal to हमें t को substitute करथले a to the power z रे a to the power z to square root of t square minus 4 t square minus 4 is equal to a to the power z
minus 4 over root minus 2 log t है a to the power z plus ये a to the power 2z minus 4 square root mod plus c. ये क्वेश्चन नंबर बीट 4. क्वेश्चन नंबर बीट 4 पर बीट 5 देखले 5 रो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा tan थीटा रो स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा minus 3 into del d theta. ओके सो आम को tan स्क्वायर थीटा को भांगी दबा केमती ना इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा tan थीटा स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा होची sec स्क्वायर थीटा minus 1 minus 3 into d theta. Okay, so that is equal to integration of tan theta square root of sec square theta minus 4 d theta. अच्छा बर्तन में पुटिंग कर दिया पुटिंग t is equal to sec theta ताले यार डिफरेंशिएट कले कौन हो ना dt by d theta is equal to sec theta tan theta sec theta tan theta. So dt is equal to sec theta tan theta into d theta. So sec theta tan theta d theta है dt sec theta tan theta d theta हमको dt सब्स्टिट्यूट कर दबा. So that is equal to integration of t square is t square minus 4 square root into dt. पता नहीं यार केवल इंटीग्रेशन करवा तने तेणु आपको बायपास करने पहले आपको टू पार्ट रे टू फंक्शन रो मल्टीप्लिकेशन पार्ट डिवाइड कर पाए पड़ो एमती 1 into t square minus 4 dt. तेणु बायपास रो अनुसार फर्स्ट फंक्शन रो हम बायपास रे फंक्शन चूज करवा के फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन रखिबा a को सेकंड फंक्शन रखिबा t square minus 4 रो स्क्वायर रूट को. ओके सो आपको बायपास फॉर्मूला पुट करवा that is equal to integration of a first function into second function. First function is dt second function is t square minus 4 to square root minus integration of a first function into derivative of a second function or a whole integration. Okay, so that is equal to integration of a dt that is equal to t square minus 4 minus integration of t into derivative of t square minus 4 that is equal to 1 by 2 t square minus 4 the square root into 2t 2t.
କାରଣ ଟି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4 ଟି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4 ଡେରିଭେଟିଭ୍ ହେଲା 2t into dt. So integration, so that implies integration of t square minus 4 over to dt is equal to t into t square minus 4 square root minus integration of 2 cancel कर देला t square by t square minus 4 square root dt. That is equal to t square root over t square minus 4 minus integration of t square रे हमें 4 को माइनस करिबा एवं प्लस करिबा डिवाइड बाय t square minus 4 square root dt. ताले ए दुईटा को हम अलग अलग इंटीग्रेशन रे करिबा t square root of t square minus 4 minus integration of t square minus 4 by square root of t square minus 4 dt. ए माइनस टा ये प्लस को माइनस कर दबो, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 4 by t square minus 4 square root dt. So that is equal to t square minus 4 square root dt integration होची t square root of t square minus 4 minus integration of t square minus 4 square root dt. कारण t square minus 4 डिनोमिनेटर अच्छी t square minus 4 square root तार सिंप्लिफिकेशन लाए थे कि minus 4 integration of 1 by t square minus 2 square square root dt. हमें 4 को कौन करें ना 2 स्क्वायर कर देला तब माने ये है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 by. So एटा को लेफ्ट को नहीं ऐसा, that means integration of t square minus 4 dt plus over root plus integration of t square minus 4 square root into dt is equal to t square root of t square minus 4 minus 4 ln t plus square root of t square minus 4 plus c. So that implies 2 into integration of t square minus 4 square root dt is equal to t square root of t square minus 4 minus 4 log t plus t square minus 4 square root plus c. That is equal to integration of t square minus 4 square root dt is equal to t by 2 t square minus 4 square root minus 4 log t plus t square minus 4 square root the mod plus c. So आपको जो आम सब्स्टिट्यूट करवा टी स्क्वायर माइनस 4 को आम एक्चुअली पाइबा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा टैन थीटा रो ओवर रूट टैन स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 3
डेल थीटा इज इक्वल टू आम रखा टी नहीं सेक थीटा बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा -3 -4 log tan थीटा है सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा -3 स्क्वायर रूट प्लस सी ओके ये हमारा आंसर ये चलीगला कौन क्वेश्चन नंबर 9 नंबर 8 बीटी 5 खत्म हो गला।